Friends, a couple of days before, I happened to go through an article written by Dr. Grabowoi, a German doctor, and H. Bresser. It's about Dr. Wohl's work. It is, the heading of the article is topographic positions of the measurement points according to electroacupuncture. At our reach, we have Professor Chanchal Agarwal, who is able to communicate to us in the simplest possible way what they have written, who are of international standard, very well-known authors. Professor Chanchal Agarwal's classes are, really second to none in terms of giving clarification and authenticity on the subject. I'm very proud of her, and again, on behalf of all of you, I extend a hearty welcome to our Chanchal ji for today's session. So over to Professor Chanchal ji. Thank you, friends. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, Ishan. And thank you everyone for joining the next session of Dr. Walls. So today we'll start with a new meridian of Dr. Wall. But before that, we should understand what we have already covered. Out of all 9 tissue meridians, which are given by Dr. Wall as new meridians, what are the different meridians we discussed about? Number 1, LY, that is lymph meridian. Number 2, ND, that is nerve degeneration meridian. Number 3, AD, that is allergy degeneration meridian. And number 4, OR, that is organ degeneration meridian. ये 4 meridian हम लोगों ने कर ली, and these 4 meridians, why they are different from rest of the meridians? Because these meridians are on the palm, ना हाथ की उंगलियों में. Now we are continuing with the subject and moving on to the next meridian, number 5, that is your JD meridian. Number 6 will cover your, after JD meridian, will cover fibroid degeneration meridian, FIBD. Number 7 would be your skin meridian. And number 8, it would be your fatty degeneration meridian, skin degeneration meridian. Why these 4 meridians are different? Because these 4 meridians are on the foot and treatment basically on the toes. And the last meridian, number 9, it would be your eye orbit meridian. Okay? So today we'll be doing joint degeneration meridian, JD meridian. Correct? अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट जेडी मेरिडियन, एक बहुत बेसिक बात मैं डिस्कस करूंगी जो आप में से हो सकता है बहुतों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है आज उसे बहुत अच्छी से समझ लेंगे. एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, व्हेनेवर यू आर मेंशनिंग द टो, यू विल मेंशन इट करेक्टली. जैसे फिंगर में हम क्या करते हैं, फिंगर में दिस इज व्हाट, खासकर एक्यूप्रेशर की लैंग्वेज में, दिस इज टीएच, थंब. This is your, you can call it first finger, you can call it pointer finger, but in acupressure we call it index finger, IF, right? This is your middle finger, this is your ring finger, and this is your small finger. Very, very basic thing. On toes, whenever we are mentioning, बड़ा confusing होता है जब लोग उसे mention ठीक से नहीं करते हैं. बिग टो के बगल वाली टो, बिग टो के बगल वाली टो के बगल वाली टो, स्मॉल टो से पहले वाली टो. नो, डोंट मेंशन इट लाइक दिस. इस तरीके से मेंशन नहीं करेंगे आप, ठीक है? आज इसको सीख लेंगे. दिस इज बिग टो,
That is your first toe. Next is your second toe, then third toe, then fourth toe, then fifth. याद रहेगा सबको? पैर का जो अंगूठा है बिग टो, दैट इज योर फर्स्ट टो. उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. अब ऐसे नहीं बोलना है कि बिग टो के बगल वाली टो में ये मेरिडियन आएगी, स्मॉल टो से दो उंगली छोड़कर ये मेरिडियन आएगी. So mention it according to the number which is given to it. So big, start from the big toe as 1. So 1, 2, 3, 4, 5. This is how you will mention it. So our meridian is on second toe. So where is second toe? This is our second toe. Second toe पर आएगी हमारी JD की meridian, that is joint degeneration meridian, which we are going to start today. Before we start JD meridian का एक और नाम, we are following book number 3. So I hope सबके पास treatise 3 होगी, क्योंकि treatise 3, treatise 4 and treatise 5, these 3 series of books written by Mata Prasad Ji Khemka are on Dr. Wall. EAV पर ये तीनों ही books हैं sequence में. So we are doing 9 tissue meridians which are in book number 3. In book number 4 you have TCM का revised meridians according to EAV, and book number 5 has foci and different protocols and many other things in detail. ठीक है? So book number 3 में आप जब JD meridian का chapter खोलोगे, which is chapter number 8, page number 62 in the new book. So in JD meridian it is mentioned as articular degeneration vessel. So why are we calling it articular degeneration vessel? इसको articular degeneration vessel बोलने का क्या reason है? Because JD means joint, and joint is also, the other word for joint is also articular surface और articulation. जॉइंट को ही बोलते हैं आर्टिकुलेशन या आर्टिकुलर सरफेस, जहां पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं. दैट इज व्हाई दिस मेरिडियन इज आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलर डिजेनरेशन वेसल. ओके, नाउ नेम इज क्लियर. सो व्हाट इज दिस जॉइंट? ये जॉइंट है क्या? फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. एकदम सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम समझें तो द सरफेस और द एरिया वेयर टू बोन्स are meeting is called a joint. जिस जगह पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं जॉइंट. ठीक है, लेकिन इसे समझने के संग संग एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, एंड दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बॉडी. बिकॉज जब आप बुक को पढ़ोगे, जब आप जेडी के चैप्टर को पढ़ोगे, then you will get new terminologies. बहुत सारे new terminologies मिलेंगी. अगर आपने ये basic concept अगर clear कर दिया कि what is a joint and what are the different types of joints present in the body, then treatment becomes very simple, because you will understand what this joint means and how to treat it. Because this is a very very small meridian, है ना, बहुत छोटी सी meridian है. So what are the different types of joints which are present in the body? Number 1, types of you can just note it down, huh? Because future reference will become very easy if you note it down. So first is, you can write it down as types of joints. हाँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में सीधा नहीं आएंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए. ये सब तो पढ़े हुए जॉइंट है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, है ना. तो ये सब नाम सुने होंगे ना, साइनोवियल जॉइंट. ये ऐसे नहीं है, इसका एक बेस है, एक आधार है, इसका एक बैकग्राउंड है. उससे समझेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि इसका ये सारे जॉइंट्स आए कहाँ से, ये नाम कहाँ से आ रहे हैं. तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि दीज जॉइंट्स आर एक्चुअली ऑफ 3 टाइप्स. कितने टाइप के होते हैं? टोटल पूरी बॉडी के अगर सारे जॉइंट्स को अगर हम देख लें तो 3 ही टाइप के जॉइंट होते हैं. एक को हम बोलते हैं फाइब्रस
जॉइंट, पहला नाम क्या है? फाइब्रस जॉइंट। दूसरा नाम क्या है? कार्टिलेजिनस जॉइंट। और तीसरा जॉइंट का नाम है साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, कितने जॉइंट हो गए? कितने टाइप के जॉइंट हो गए? 3। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। वन इज फाइब्रस जॉइंट, वन इज कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड वन इज साइनोवियल जॉइंट। नाउ लेट अस टेक वन जॉइंट एट अ टाइम। एक बार में एक एक जॉइंट को लेकर करते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट जो है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज वेयर नो मूवमेंट इज देयर, कोई मूवमेंट नहीं। इस टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। व्हाई देयर इज नो मूवमेंट इन दिस जॉइंट? कैन यू गिव एनी एग्जांपल वेयर देयर इज, इट इज अ जॉइंट बट देयर इज नो मूवमेंट? जॉइंट है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं। आपने देखा होगा जितने भी जॉइंट है ये सब तो हिल रहे हैं, आपकी उंगलियां हिल रही है ना, माउथ यहाँ पर जॉइंट है हिल रहा है, पैरों में जॉइंट है हिल रहे हैं। यस, वेरी गुड। स्कल, वेरी गुड। स्कल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आप अपने ही सिर में अगर आप सोचो, यहाँ पर इतनी सारी बोन्स हैं स्कल में, बहुत ऐसा नहीं है पूरा स्कल एक ही बोन से मिलकर बना है। कभी देखा होगा ना वो तांत्रिक वांत्रिक का या हॉरर मूवीज में जो स्कल दिखाते हैं, वो स्कल जब दिखाते हैं तो उसमें क्या देखा है? क्रैक्स बने हुए रहते हैं, बहुत सारे क्रैक्स होते हैं सिर के ऊपर में। सो दीज क्रैक्स आर नथिंग बट द जॉइंट वेयर द बोन्स आर क्लिंग टू ईच अदर tightly and the joints are not moving only. So this is a type of joint which is called fibrous joint or immovable joint. It is not moving. दांतों का, someone gave an example, tooth, even tooth joint on the socket, on the gums. It is an example of fibrous joint. So why we call it fibrous joint? What is the reason of calling it fibrous joint? We call it fibrous joint because the two bones are attached to each other. दो bones के बीच में ही है ना ये joint तो. The two bones are attached to each other with the help of fibrous tissue. दो जॉइंट के बीच में जो टिश्यू है जो उनको आपस में जोड़ता है, that is actually the fibrous tissue. So we call it fibrous joint. ठीक है? So this was first type, fibrous joint. Now we come to the second joint. Second type of joint is called cartilaginous joint. अब समझ में आ रहा होगा why we call it cartilaginous joint. ऊपर वाले में कौन जोड़ रहा है? यहाँ पर जोड़ रहा है fibrous tissue. Fibrous tissue is present between the joints. Between the joints. ठीक है? Cartilaginous joint क्या है? यहाँ पर little movement is there. Sorry. Little movement is there. थोड़ी movement है. ठीक है? बहुत movement नहीं है, थोड़ी movement है. And why we call it cartilaginous joint? We call it cartilaginous joint because cartilaginous or cartilage is present between the joint. Example क्या हो जाएगा? Any example? Cartilaginous joint. Common example. A very common example is vertebrae. Vertebrae. ठीक है? ईयर लोब जब आप बोलते हैं ना, ईयर लोब तो इटसेल्फ ही कार्टिलेज है पूरा का पूरा, वहां तो बोनी स्ट्रक्चर है ही नहीं. There are many other places where cartilaginous joint are present, but एक को याद रखो, वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम में कौन सा, किस टाइप का जॉइंट है? कार्टिलेजिनस जॉइंट. ठीक है? So this was your second type of joint. Now we come to the third joint. What is the third joint? Third joint is synovial joint. ये आपने सबसे ज्यादा सुना होगा because इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा भी होगा, इसके बारे में टर्म्स भी आपने सुनी होंगी. Because whenever we talk about a joint and we talk about the structure of joint, we always see the synovial joint.
उसी जॉइंट को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बिकॉज सबसे ज्यादा काम उसी पर करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ जॉइंट साइनोवियल जॉइंट इज, इसके एग्जाम्पल्स भी हम सबसे ज्यादा समझते हैं। तो जो साइनोवियल जॉइंट है, इट इज एक्चुअली द जॉइंट वेयर free movement is present, free movement or wide range of movement. Wide range of movement is present. बहुत movement है इन सारे ही साइनोवियल जॉइंट्स पे, बट साइनोवियल जॉइंट से रिलेटेड कुछ बातें जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज अ साइनोवियल जॉइंट, बिकॉज आप इसी के ऊपर सबसे ज्यादा काम करोगे। स्कल के जॉइंट के ऊपर में करोगे काम, थोड़ा सा कम होगा कंपैरेटिवली। कार्टिलेजिनस जॉइंट पर भी करोगे, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम, बट साइनोवियल जॉइंट पर इसलिए सबसे ज्यादा करोगे क्योंकि एक तो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट जो जॉइंट है दैट इज योर साइनोवियल जॉइंट, इजीली आपको मिल रहा है टू वर्क अपॉन। तो इसकी कुछ खास बातें साइनोवियल जॉइंट की। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट साइनोवियल जॉइंट? पॉइंट नंबर 1 जो आपने अभी अभी लिखा, वाइड मूवमेंट, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा इसे, हाँ, क्योंकि अगर आपने इसे लिख लिया, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहिएगा, लिख लेंगे अगर, तो अब जब मैं नेक्स्ट आपको डायग्राम दिखाऊंगी ना, देन यू विल बी एबल टू कंपेयर एंड फॉलो, और आप उसे कभी जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, जो मैं नेक्स्ट डायग्राम के संग आपको समझाऊंगी। सो सेकेंड पॉइंट यू शुड राइट डाउन इज हियर, टू bony surfaces are covered with articular cartilage। अभी नहीं समझ में आया ना, तब भी लिख लो ऐसे, जो लिख रही हूं बस वैसे ही कॉपी कर लो। Here two bony surfaces are covered with articular cartilage. Next point, joint cavity contains viscous fluid called synovial fluid. Point number 4, joint covered with synovial membrane. Point number 5, synovial membrane is covered with synovial capsule. And last point, synovial capsule is covered with ligament. Now, why I asked you to write all these points? The reason being, whenever you are treating a certain joint of any patient, you should understand what is actually there within that joint. आप उसमें कर क्या रहे हो? बहुत बार आएगा पेशेंट आपके पास में और बोलेगा लिगामेंट टियर हो गया, एसीएल लिगामेंट, या इस तरीके से, हाँ, डिफरेंट टाइप के लिगामेंट्स के नाम बताएगा क्योंकि रिपोर्ट लेकर आएगा। उस रिपोर्ट में लिखा होगा लिगामेंट टियर हो गया या लिगामेंट की प्रॉब्लम आ गई, लिगामेंट का इरोशन हो गया। आपको यही नहीं पता कि जॉइंट में लिगामेंट होता कहाँ है। कभी लिखा होगा कैप्सूल की प्रॉब्लम है, कहीं भी कभी लिखा होगा फ्लूइड हैज ड्राइड अप। पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर ने बोला है आपका जो घुटना है या कोई जॉइंट, जिस भी जॉइंट की प्रॉब्लम है वहां पर पानी सूख गया। अब आप सोचो कि पानी कहाँ से आ गया, कोई भी जॉइंट है, जॉइंट के अंदर पानी कहाँ से आ गया, फ्लूइड कहाँ से आ गया, ये फ्लूइड कैसे सूख गया। So you should know what this fluid is and where is it present. कभी लिखा होगा cartilage, it is covered with articular cartilage. So articular cartilage has eroded, ऐसे लिखा हुआ है. Now you don't know what is articular cartilage. So how will you treat it?
You don't only understand ki where are these structures present, then how are we going to treat? Now see this picture which I am going to show. See this picture. Now whatever you have written, you just follow point wise. What was the first point written? The first point was written, a joint where wide range of movement is present. Huh? So this is a joint where a lot of movement is there. Point number one. A lot of movement is there. What was point number two? Point number two was here two bony surfaces are covered with articular cartilage. Can you make out where the articular cartilage is there? Where is the articular cartilage? दिख रहा है यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है labeling में. So this is आर्टिक्यूलर कार्टिलेज. तो देख पा रहे हैं दो बोन्स के ऊपर में ये है आर्टिक्यूलर कार्टिलेज, ये सरफेस ढका हुआ है. What was point number 3? Point number 3 was joint cavity contains viscous fluid called synovial fluid. So where is synovial fluid? Now follow the diagram again. Where is the synovial fluid? Synovial fluid. Where is it? Where is it present? It is present in the cavity. Bone, दो bones के बीच की cavity में भरा हुआ है synovial fluid. What was the next point? Joint is covered with synovial membrane. Synovial membrane है यहाँ पर. So where is synovial membrane? This is synovial membrane. So you can see on two sides it is covered by. It is not actually the two sides. It is a two-dimensional structure. Two-dimensional figure, so you are saying it on two sides. Otherwise, it is covered. The whole capsule is covered by a synovial membrane. The joint is covered by synovial membrane. Okay. What was the next point? Synovial membrane is covered with synovial capsule. So where is capsule? This is capsule. So on the synovial membrane, you can see there is a capsule here. Can you see? This whole thing. Membrane के ऊपर एक और membrane है, एक structure है, that is called synovial capsule. And the last point was synovial capsule is covered with ligament. So on topmost surface or above the capsule, you have the ligament. So this is your ligament. So I'll show you the picture once again. So this is your bone, this is the bone, this is the articular cartilage. Uske baad hai the cavity which is filled with synovial fluid. Then is the synovial membrane. Outside the synovial membrane, you have the capsule, joint capsule, and outside the joint capsule, you have the ligament. 6 points है ना, यही 6 points है. So 6 point आपने देख लिया diagram में. Is it clear to everyone? So this is a classical example of the synovial joint. So I hope सबको ये synovial joint का classical example जो है ना, ये हमेशा याद रहेगा. But before that, I'll show you one more picture. That is also a very nice picture. See this. इसकी आप picture लेकर रख सकते हो. The 3 types of joint which we discussed: the fibrous joint, cartilaginous joint, and synovial joint. है ना? एक है एकदम immovable, एक है semi movable और एक है freely movable. जिसमें एक में बिल्कुल भी movement नहीं है, एक में थोड़ी movement है और एक में बहुत ज्यादा movement. So these are the 3 joints. And जिसमें हम अभी कर रहे हैं synovial. This is the joint which we are discussing about, synovial joint. ठीक है? Now synovial joint is not yet over. Why not yet over? Because the synovial joint can be of many types. There can be many types of synovial joint. What are the different types of synovial joint? First, see this picture, and then we'll come into the detail of it. See this. ये थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा होगा कि अरे बाप रे इतने टाइप के जॉइंट होते हैं. ये सारे साइनोवियल जॉइंट है. ये जितने भी जॉइंट यहाँ दिखा रखे हैं ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं? साइनोवियल ही जॉइंट बोलते हैं. सो अगर आप पाइवट जॉइंट बोलते हैं या सैडल जॉइंट बोलते हैं, प्लेन जॉइंट बोलते हैं, हिंज जॉइंट और कॉन्डिलॉइड जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
Actually, all the 6 type of joint are under synovial joint. Yani in all the 6 type of joint, you will get the same structure, that is presence of cartilage, presence of synovial fluid, presence of synovial membrane, the capsule, the ligament, everything is present in all the 6 types, but these are the varieties of synovial joint. ये variety synovial joint. ठीक है, अब ये तो नाम थे. अब देखो इसमें एक और पिक्चर में दिखाती हूँ, that is also a very beautiful picture. It's a very very nice picture. इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, then you will be able to understand the 6 types of synovial joint. कैसे शुरू करेंगे? You don't follow this diagram as it is. मैं जैसे बोल रही हूँ ना, उसको वैसे follow करना. First see this. First see the pivot joint. पहले सबसे पहले pivot joint को देखो. ठीक है, where is pivot joint? Pivot joint को किस कलर में लिखा हुआ है यहाँ पर? Violet color में. So wherever you are getting the pivot joint violet color ना, you follow that joint. So where is it shown? यहाँ दिखा रखा है. And radius ulna में दिखा रखा है. So आप इसको भी भूल जाओ. Radius ulna वाले को ना, इसको एक बार भूल जाओ. मतलब ऐसा नहीं है ये एग्जिस्ट नहीं करता है. मैं वो चीजें बताना चाहती हूँ जो आपको हमेशा याद रहे. So आप किसको याद रखो? एक बार आप याद रखो सिर्फ एटलस एंड एक्सिस के जॉइंट. So this is an example of, and why are we discussing all this? Because these are mentioned in your book. ये आपके चैप्टर में है. जेडी वाला चैप्टर करेंगे ना, तब आपको ये सब मिलेंगे. और आप you will be very happy to know कि जब आप उन चीजों को आप पढ़ोगे तब आपको बहुत easy लगेगा. That is why we are discussing these. So atlas and axis का जो joint है, it is a pivot joint. What is a pivot joint? Pivot joint का मतलब होता है कि समझ लो यहाँ पर कोई एक object है and this is another object which are present on each other. This is one object and this is second object, and I put this second object on the first object with the help of a pivot. Pivot means nail, है ना? Nail का मतलब है कील. आपने कोई चीज से उसके ऊपर बैठा दिया. Now this first object can move on the second object because of this pivot, because of this axis. Okay, it's a screw. Yes, it's like a screw. So because of this screw, now it can move. This is called pivot. So आपका ये जो skull है, आप सोच के देखो, इतना भारी ये skull 2.5 किलो का आपकी बॉडी के ऊपर फिट कर दिया गया है, and you are able to move it, and it has been given the power to control the whole body, and it is not falling off. सारा दिन आप सोचो कितनी बार इसे मूव करते हो, because of this joint which is called the pivot joint. So your cervical का topmost vertebra is holding the skull. ठीक है, and the first vertebra and the second vertebra has a joint which is called the pivot joint. Atlas is the first vertebra, axis is the second vertebra, and they are present on each other with the help of this pivot joint. Let me see if I have the picture. You may get better pictures on net for this pivot joint, but I just wanted to show you. This is your skull. This is skull. Okay? This is occipital bone. And this is the first vertebra, that is your atlas, first cervical vertebra. This is axis, that is your second. So ये पहली vertebra है, ये second vertebra. So atlas and axis are actually forming the pivot joint. ठीक है ना? यहाँ से अभी इतना ही समझना है. Now again come back to the same picture. After the first joint, याद रहेगा, सबसे ऊपर से शुरू कर रहे हैं. सबसे ऊपर कौन सा joint है? Pivot joint. That is also a synovial joint. Now come below it. Below it you will get this joint, है ना? ये एक joint है. ये वाला joint याद रखना सबसे easy है, because बचपन में गुड्डे गुड़ियों से खेला होगा ना, और उसमें डॉल के हाथ तोड़ के निकालना या टांग टूट के निकल जाना, तब आपने देखा होगा ना कि it is something, it's a structure like this where this leg or hand has come out, and then we used to put it back, right? So one has a ball, the rounded part, and
दूसरा था उस डॉल का जो हॉलो पार्ट जिसके अंदर आप उसे घुसा देते थे, इफ यू रिमेम्बर. सो ये जो राउंड पार्ट है दैट इज द बॉल, and the other part which is a hollow part is actually the socket in which you are pushing it. So this joint is ball and socket joint, and this ball and socket joint को आप देखो कहाँ कहाँ है. ball and socket joint को कौन से कलर से दिखा रखा है? This is shown with the color red, है ना. So red color कहाँ कहाँ दिखाया है? Very classical example is your shoulder joint and hip joint. इसीलिए शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन, हिप जॉइंट डिसलोकेशन बहुत कॉमनली देखने मिलता है, क्योंकि बॉल अगर निकल गई सॉकेट से तो डिसलोकेशन हो गया, प्रेशर पड़ गया तो बॉल अपने सॉकेट से निकल जाएगी, फिर उसे रीलोकेट करना होता है. उसी तरीके से हिप जॉइंट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. नेक्स्ट यू कम टू, देखो जो ऊपर है ना, जो ऊपर के पार्ट में मिलेगा वही नीचे के पार्ट में मिलेगा. सो ऊपर का शोल्डर जॉइंट इज इक्विवेलेंट टू हिप जॉइंट, पैर का हिप जॉइंट. तो ऊपर शोल्डर में मिलेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सेम जॉइंट यू विल गेट ऑन द हिप जॉइंट, है ना. नेक्स्ट यू विल गेट इज द हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट कैसा जॉइंट है? हिंज जॉइंट का मतलब है जो दरवाजे में होता है. दरवाजा कैसे खोलते हैं? ऐसे खोलते हैं ना. सो दरवाजे में I'll show you like this. See, this is the door which is opening and closing. So this is the area where the door is attached, है ना, to the frame. So this area is actually the hinge. So आप सोचो आपकी बॉडी में कौन सा पार्ट ऐसा है जो दरवाजे की तरह खुलता है. देखिए यहाँ पे सर्कल किस किस में किया हुआ है. So it has been marked on elbow joint, knee joint, ankle joint. All these are what? Hinge joint. Fine. So this is your pivot joint. This is your ball and socket joint. This is your hinge joint. 3 joint समझ ली. उसके बाद next joint पे आ जाओ, and that is your gliding joint. Gliding joint is a joint which glides on each other. Glide करेगा. जैसे आपके यहाँ पर कार्पल्स में, रिस्ट में जो कार्पल्स है ना, they glide on each other. So this intercarpal joint या intertarsal joint, जैसे हाथों में intercarpal होगा वैसे पैरों में क्या होगा? intertarsal होगा. ऐसे याद रखो. So intercarpal और intertarsal joint are actually the type of joint which are called gliding joint. They glide on each other. अगर glide नहीं करते तो ये wrist में इस टाइप की मूवमेंट नहीं मिलती. ठीक है. Next is your condyloid joint. Condyloid joint. Condyloid joint. Where is it shown? It is shown on wrist. Condyle, because there is condyle here, so we call it condyloid joint. So wrist ka joint is an example of condyloid joint. And the last type of joint is the saddle joint. देखो बाहर ऊपर से नीचे की तरफ आते जा रहे हैं. ऊपर क्या था? सबसे ऊपर में pivot joint, then ball and socket joint. This is your hinge joint. This is your condyloid joint. Carpals में आ गया gliding joint. अब आ जाओ phalanges की तरफ, तो इसमें एग्जांपल लो अपने अंगूठे का. बेस ऑफ द थंब में बहुत पेशेंट आएंगे आपके पास में इस जॉइंट की प्रॉब्लम लेकर कि मुझे अंगूठे के बेस में बहुत दर्द होता है. एंड सर के खेमका सर की किताबों में टेनोसाइनोवाइटिस करके दिया हुआ है. बेस ऑफ द थंब में अगर पेन हो रहा है तो उसके पॉइंट्स बहुत अच्छे पॉइंट है. सो दिस बेस ऑफ द थंब is actually your saddle joint. So saddle मतलब जो घोड़े की पीठ पर जो लगाते हैं ना, so that type of joint is here present here, so we call it saddle joint. So this base of the thumb joint is an example of the last type of synovial joint, and that is saddle joint. ठीक है. So इसमें कुछ pictures में आपको just for clarity pivot joint का एग्जांपल हमने देखा था द फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा.
फर्स्ट एंड सेकंड वर्टिब्रा के बीच का जो जॉइंट है पाइवट जॉइंट, बट यहाँ पर रेडियस अल्ना का दिखा रखा है, उसे भी आप समझ लो। तो दो बोन्स के बीच का जो जॉइंट है दैट इज योर पाइवट जॉइंट। दिस इज प्लेन जॉइंट or the gliding joint, you can call it gliding joint also. This is on the carpals. This is saddle joint, which we discussed just now, the last joint, which is at the base of the thumb. So this is saddle joint. This is condyloid joint on the wrist. This is ball and socket joint, that is on the shoulder or the hip joint. And the last one, that is your hinge joint, that is on the elbow or the knee. This is an example of hinge joint. ठीक है ना? So ये सारे joint जो थे ना, ये हमें पता होना चाहिए. Now, if I ask you how many types of joints are there, you would be very clear that there are actually 3 types of joint. One is immovable, one is slightly movable, and third one is very much movable. Immovable is skull, slightly movable is your spine, and your very free movable joint is your synovial joint, which are of 6 types. 6 types of synovial joints are there, which are present all over the body. And each joint, each of these 6 types of joint, synovial joint, has the structure of the 2 bones covered with articular cartilage. On the joint, you have the synovial fluid, which is covered with synovial membrane. Synovial membrane is covered with the capsule, and outside the capsule, you have the ligament. Now, is it clear to everyone? So अब समझ में आ रहा है कि फ्लूइड की प्रॉब्लम लेकर अगर पेशेंट आ रहा है, so where is this fluid present? अगर लिगामेंट की प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, so where is this ligament present? ठीक है? So this was about joint. Now we come to some explanations which are given in the book. See, now you open the first page of the chapter. First page of the chapter. So where is this meridian present? This meridian is actually present on which toe? You put it in the chat box. Which toe? So now you will not mention toe next to big toe. That is what I was waiting for. है ना? So you will mention it as second toe. And इसे याद रखेंगे. It is the second toe where the JD meridian is starting. How many points are mentioned here? Number of points? Number of points? Total number of points are 7. And it is a bilateral membrane, meridian. That means it is present on the left toe also and on the right toe also. So JD meridian is present on the second toe. It is present towards the thumb. Where is it? Which side it is present? It is present towards the thumb. And it has 7 points in it. Now, there's something mentioned here, which I feel everyone should know. See the second point. Joints, first point is joints of upper and lower. It treats joints of upper and lower extremities. ये जो मेरिडियन है, ये upper and lower extremities के joints को treat करेगा. Along with that, it will also treat joints of pelvic girdle. Second point ये दिया हुआ है, joints of pelvic girdle. Now, if you don't have the book, doesn't matter. You just listen to what I'm saying. This meridian treats the joint of pelvic girdle. So what is this pelvic girdle? What is the meaning of pelvic girdle? Pelvic girdle का मतलब होता है, I'll show you one picture. See this. Hip joint, yes. In general, we can call it hip joint. Layman की language में, अगर अच्छी anatomy की language में बोलना है, then we'll say that this is pelvic girdle because it is forming a girdle, है ना? और इसी girdle के ऊपर ही हमारी जो body के organs हैं वो fit हो रखे हैं. जैसे सिलेंडर के नीचे आप रिंग लगाते होगे ना, और उस सिलेंडर के रिंग के ऊपर भी पूरा सिलेंडर बैठा दिया, इतना भारी सिलेंडर, and it is supporting that cylinder, है ना? और क्यों रिंग लगाते हैं सिलेंडर के नीचे? So that you can move it easily, आगे पीछे कर सके.
Same thing. This girdle is acting as a ring which is supporting the whole body, and so that your body can move easily. Otherwise क्या होता? अगर ये girdle ही नहीं होता तो क्या होता? कहीं से बॉडी यहाँ गिर गई, कभी बॉडी यहाँ गिर गई, ऐसा होता है क्या कि चलते चलते बॉडी गिर गई, आपने उठा के उसको वापस रख लिया? ऐसे ऐसे तो नहीं है, because you have the girdle. So this is the beauty, this is the architecture of the nature, that your body is so well supported by a girdle, and it is the pelvic girdle. So this JD Meridian can treat pelvic girdle. Next, see, third point is joints of all vertebrae of spine it can treat. And next, see, shoulder girdle, it can treat shoulder girdle. What is shoulder girdle? Shoulder girdle must be related to shoulder. So what is this shoulder girdle actually? Girdle means a ring. So where is this ring? So this is a very nice picture. This is shoulder girdle. So what is shoulder girdle? If you see your girdle, then you just press it downward like this. So if you press it like this, you can feel the collarbone. There's a collarbone in front. So this collarbone is nothing but the clavicle bone, the front bone. Now this collarbone is going at the back and meeting the shoulder blades. Layman ki language mein jaise aap shoulder blade bolte. So this shoulder blade and the clavicle is forming another ring. It is forming a ring. So this ring is called the shoulder girdle. So it will treat the shoulder girdle also. Okay. After that, see what is written here. Come to this point, temporomandibular joint. It will treat temporomandibular joint. अच्छा, इसको temporomandibular joint तो नहीं आपने सुना होगा, आपने TMJ बहुत सुना होगा. TMJ की प्रॉब्लम हो गई, है ना? If you have not heard, you will hear it in future, because the patients come with the prescription of the doctor written as TMJ. Problem of TMJ. What is TMJ? TMJ is temporomandibular joint. What is temporomandibular joint? First आप देखो इस picture को देखो. This is a very beautiful picture. See, it's written as temporomandibular joint. So this area is what? Temple area. Na? And the upper bone, upper jaw is also called, upper jaw is called, what is the name of the upper jaw? What is the name of the, no, just because I'm teaching the temporomandibular jaw, you will not mention the upper jaw as mandible. Yes, maxilla. Okay. So name of the upper bone is maxilla and name of the lower bone is mandible. ये याद रखना है. MM, maxilla, mandible. Maxilla, maximum smile करोगे ना आप. और mandible, ये man का structure है, mandible. So the lower bone is mandible. So this lower bone is coming here to the temple area and joining here with the help of a disc. There's a disc present. That is why you can move it. अपना move करके देखो. Upper jaw को move कर सकते हो? Upper jaw is fixed. Only movable bone here on the face is your lower jaw. है ना? So this joint is a very important, vital. कई बार देखो कि यहाँ पर पेन हो जाता है इस पॉइंट पर, because this is a very vital. कभी कभी आपने समझो बहुत कड़ी हार्ड चीजें खा ली और या फिर आपने unnecessary स्माइल किया. So what do you say? अरे मैं तो यहाँ पर दर्द हो गया, है ना? So what is that? You are smiling unnecessarily. Continuously you are smiling when it's not needed. So what happens? This disc is given the extra pressure. So this is your TMJ. So TMJ is also treated with JD. आप बोलोगे कि TMJ का JD से क्या relation है? Yes, you can treat TMJ with JD. JD Meridian. ठीक है ना? Next is jaw joints. Already you understood. Joint of occiput and head. Occiput and head. Occiput and head के joint को भी treat कर सकते हैं. देखो इसमें एक चीज आप लिख लो. Occiput and head. That means जो अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी ना जिसमें स्कल था and then you had the vertebrae one below the other, है ना? So this is your occiput, occipital bone, and after that it is your first cervical, then it is your second cervical, and so on. So we are talking about this joint, occiput and head का joint. ठीक है? So
you can note it down as this occipital first cervical bone ka joint is also known as, where this point is mentioned, there only you can mention it with pencil. It is also known as ATLANTO, Atlanto-occipital joint. C0, C1 joint. जिन लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर किया है, सीखा है थोड़ा बहुत, और जिन लोगों ने हैंडबुक 3 फॉलो की होगी, आयुर्वेदिक हैंडबुक 3, और जिन लोगों ने फिंगर्स पर जॉइंट्स की जो प्लॉटिंग है नर्व की, उसमें C0 C1 अगर देखा होगा तो आज आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द C0 C1. अदरवाइज वी ऑलवेज से ना कि C1 से सर्वाइकल तो 1 से शुरू होती है, C0 क्या होता है? दिस इज C0, योर ऑक्सीपिटल बोन एंड सर्वाइकल 1 के बीच से भी तो नर्व निकलेंगी. डिड यू गेट माय पॉइंट? थोड़ा सा आगे की बात बता दी मैंने ये बीच में, दैट दिस इज योर ऑक्सीपिटल बोन, स्कल का बोन, लोअर बोन, and after that is your C1, then is your C2, then is your C3, C4, C5, C6, C7, है ना? ये तो है. अब हर वर्टिब्रा के बीच से नर्व निकल रही है, यहाँ से ये सब नर्व निकल रही है, सब वर्टिब्रे के बीच से. So this first vertebra and the skull के बीच से भी तो नर्व निकल रही है. This is called C0 C1 nerve. जो वहां मेंशन है, कई लोगों को नहीं समझ में आता C0 C1 क्या हो गया. C तो 1 से ही शुरू होता है, C0 क्या होगा? But the nerve which is coming out from occipital bone and the cervical bone is C0 C1 joint. ठीक है ना? So what we were doing, Atlanto-occipital joint, it is also called C0 C1 joint. It is present, it is a joint between base of skull and cervical spine. ठीक है, ये उसके बगल में आप लिख कर रख दो, है ना? उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद वाला पॉइंट जो है ना, ये है जॉइंट्स ऑफ एटलांटो एक्सियलिस. इसके बगल में भी लिख लो. हाँ, इसके बगल में भी स्टार मार्क देकर लिख लो. इट इज अ, कौन से जॉइंट की बात कर रहे हैं हम? ये था एटलांटो ऑक्सीपिटल और ये है एटलांटो एक्सियलिस. Atlanto axialis. So what is this Atlanto axialis? It is a joint in upper part of neck between first and second cervical vertebra. The pivot joint. फर्स्ट वर्टिब्रा मतलब एटलस, सेकंड वर्टिब्रा मतलब एक्सिस. सो अगर इसे इस तरीके से आप समझो, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू अगेन. ये जो 7, यहाँ तक 7 चली गई. सो द फर्स्ट जॉइंट दैट इज बिटवीन द ऑक्सीपुट and the first vertebra is atlanto-occipital. ठीक है? And the second joint which is present between the first vertebra, that is C1, and C2 is called the atlanto-axialis. This one. And this is this one. इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हो? जेडी की मेरिडियन.
ठीक है ना, इतना स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. सो वी आर ब्लेस्ड, वी आर गेटिंग सो मच डिटेल ऑफ द सब्जेक्ट. सो जेडी इज नॉट ओनली जेडी, खाली जेडी बोल दिया जॉइंट को ठीक करेगा. अरे किस किस जॉइंट को ठीक कर सकते हो आप? इन सब जॉइंट्स को भी ठीक कर सकते हैं. ठीक है ना. उसके बाद का ऑलमोस्ट सारा पार्ट आप मुझे लगता है कवर कर लोगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. एंड then it is written as what is degenerative arthritis, osteoarthritis. So osteoarthritis is fine. मतलब osteoarthritis you will understand कि whenever the person has osteoarthritis, you will choose JD Meridian. What is osteoarthritis? Osteoarthritis is age related. In layman की language में आप लिख के रख सकते हो. Age related arthritis is called osteoarthritis. So अगर postural problem है, wear and tear of the joint हो रहा है, excessive use of the joint हो रहा है, या आपने उसका improper use किया है joint का, then the person will suffer from osteoarthritis. ठीक है. So एक age के बाद 50-60 की age के बाद जो दर्द होते हैं, usually that pain is because of osteoarthritis. So सबसे common type of arthritis which is because of age, which is because of wear and tear, which is because of misuse or excessive use of the joint, type of arthritis is called osteoarthritis. So for that you will use JD Meridian. ठीक है. अब उसके बाद आप आ जाओ, come to the explanation of each point, and that is also very beautiful and very simple to understand because it has very few points. Only 7 points are there, है ना. कौन कौन से 7 points हैं? Sorry. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, बस यही 7 पॉइंट्स. कहाँ खत्म हो गए? देखिए इस पार्ट में ही खत्म हो गए जेडी के पॉइंट्स, है ना. अब आपको समझ में आया होगा इसमें ARD ये सब क्यों लिखा हुआ है. क्यों लिखा हुआ है ARD मतलब आर्टिकुलर डिजेनरेशन. सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट JD, you may get at places it is written as ARD. ARD means articular degeneration. तो एक ही बात है. आप ऊपर वाला ड्राइंग देख लो या नीचे वाला एक्सप्लेनेशन देख लो, इट इज ऑल द सेम. ठीक है. अब इसमें आपको देखना क्या है. फर्स्ट पॉइंट इज JD1. व्हाट इज दिस JD1 फॉर? अगर वही पिक्चर अगर आप याद करते हो, बॉडी की डिवीजन, है ना. सो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, lower part of the body, for lower part of the body we use 1, middle part of the body we use 2, upper part of the body we use 3. ये करते हैं ना 1 2 3. सो इसी को हम फॉलो करेंगे 1 2 3 को. तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए JD1, है ना. तो JD1 में देखो क्या लिखा हुआ है अपने अपनी बुक में, या अगर बुक नहीं है तो आप सुनो क्या लिखा हुआ है. जॉइंट ऑफ पेल्विक गर्डल, जॉइंट्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, सैक्रोइलियक जॉइंट एंड जॉइंट ऑफ लंबर वर्टिब्रा. सो नीचे से शुरू करो. तो लोअर एक्सट्रीमिटीज इट विल कवर लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी पैरों का ट्रीटमेंट करेगा. इट विल ऑल्सो कवर, पैरों से थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तो क्या आएगा? हिप गर्डल आएगा ना. तो दैट इज योर हिप गर्डल या पेल्विक गर्डल. पेल्विक गर्डल या हिप गर्डल. उसके थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ, देन लंबर वर्टिब्रे. बात समझ में आई जो मैं बताना चाहती हूँ? जो JD का 1 नंबर पॉइंट है ये पैरों को ट्रीट करेगा, पैरों के ऊपर के गर्डल को ट्रीट करेगा, दैट इज हिप को ट्रीट करेगा, और यहाँ पर जो लोअर स्पाइन है उसको ट्रीट करेगा, है ना. ये बॉडी है, ये हाथ है, ये फेस है. सो इट विल ट्रीट लोअर लेग्स, द लेग्स, हिप एंड द लोअर स्पाइन, लंबर. ठीक है ना. सो इसमें एक वर्ड दिया हुआ है सैक्रोइलियक जॉइंट. व्हाट इज सैक्रोइलियक जॉइंट? ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज ये रिपोर्ट्स में लिखा रहता है
नहीं समझोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि सैक्रोइलियक जॉइंट कौन सा हो गया. आई शो यू वन पिक्चर which shows very clearly sacroiliac joint. Just a minute. Yes. So this is your pelvic girdle. This is your pelvic girdle, है ना? This is the lowermost part of the spine, which is called sacrum. And sacrum के नीचे का part होता है जिसको हम लोग बोलते हैं coccyx या tailbone, है ना? इसी के ऊपर पूरी spine खड़ी है. This is spine. And this girdle, which is called the pelvic girdle, इसमें आप देखो जो pelvic girdle का sacrum के संग जो joint बन रहा है, this is called sacroiliac joint, because it is joining the sacrum with the ilium. pelvic girdle के तीन bones होती हैं यहाँ पर, ilium, ischium and pubis. ilium, ischium and pubis, ये तीन bone है. इन तीनों बोन्स के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को ही हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं. सो सिंस सैक्रम, दिस सैक्रम इज मीटिंग विद द इलियम, ये लिखा हुआ ना इलियक बोन, एंड दिस इज योर सैक्रम. सो सैक्रम और इलियम का जॉइंट है, सो वी कॉल इट सैक्रोइलियक जॉइंट. सो बहुत लोग जिनको हिप जॉइंट रिलेटेड एलिमेंट होती है उनमें लिखा हुआ रहेगा रिपोर्ट में सैक्रोइलियक जॉइंट इज अफेक्टेड. ठीक है. Next is your this is your JD1. ठीक है. JD11 for toxic irritation of the joint, JD1A for allergic irritation of the joint. All these are because of allergies or because of something which is creating the trouble in the joint, which is the causal factor is there. Because of that, the joint is irritated or inflamed. JD1B is very important. JD1B. This JD1B is actually the CMP. So where is it? Here it is. आप देखोगे पुराने समय में इसी पर इस फिंगर में रिंग पहनी जाती थी कि नहीं पहनी जाती थी, जिसको आप बिछिया बोलते हो या टो रिंग बोलते हैं, जिसे हम यहाँ पहनते थे ना. अब क्या करना ना, अब एक टो रिंग बनवाना और उसे यहाँ पहन लेना. राइट, बिकॉज दिस विल प्रेस JD1B. और यही रीजन होता था कि यहाँ पर अगर आपका वो पॉइंट दबा हुआ रहेगा, देन यू विल, जब हम और डिटेल में कभी फ्यूचर में करेंगे, देन यू विल सी, यू विल गेट यहाँ पर स्टमक का CMP. तो सोचो पुराने समय में कितना साइंस डेवलप था. रावण ने यान बना लिया था, हम सोचते हैं हमने अभी यान बनाया है ना. उस समय एटॉमिक वॉर होते थे, हम सोचते हैं अभी हम कर रहे हैं ये सब. सो उस समय ये पता था ऑलरेडी कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. We were not told the name of the point, but this point is nothing but JD ka CMP and stomach ka CMP, which is pressed with bichia. So this JD CMP is very important for any type of joint related ailment, whether it is in the lower part of the body or upper part of the body. तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि कभी भी JD की प्रॉब्लम है, जॉइंट की प्रॉब्लम है, give JD का CMP. ठीक है. Next is your JD1C. See what is written for JD1C. JD1C के लिए लिखा हुआ है, this is actually CMP. Sorry, this is actually for synovial membrane. कहीं भी synovial membrane में erosion हो रहा है या synovial membrane related problem आ रही है, we can choose JD का 1C. So JD में 1, 1, 1, 1A, 1B, 1C, बस इतने ही पॉइंट है ना. उसमें से भी आपको क्या यूज करना है, JD का 1 तो लोअर अगर पार्ट में है तो JD1 इज मस्ट, because it is covering almost all the lower part of the body or all the joints of lower part of the body. JD1B is very important because it is covering the it is a CMP, you have to choose it. And JD1C if synovial joint is affected, खासकर synovial joint में अगर प्रॉब्लम है तो JD1C तो आपको लेना ही चाहिए, है ना. 3 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए. Now you come to JD2. JD2 should be of which part of the body? It should treat which part of the body? Middle part of the body, है ना. So JD2 में क्या लिखा हुआ है? Shoulder, joints of shoulder girdle and arm. Now you understand what is shoulder girdle. पहले अगर shoulder girdle को नहीं समझते तो shoulder girdle का ट्रीटमेंट कैसे करते? So clavicle या पीछे की ब्लेड या यहाँ पर शोल्डर में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए कौन सा पॉइंट चूज करेंगे? JD का 2 नंबर पॉइंट,
Lower cervical and thoracic vertebrae joint, C4 to C7, T11, T1 to T12. So see one thing, this is your spine. You divide it into 3 parts. The lower part is your lumbar. आगे भी है, sacrum and coccyx भी है. मैं समझाने के लिए बता रही हूँ. This is for you are treating it with JD1. ठीक है? The middle part, which is C4 से लेकर T12 तक, मतलब cervical 4, 5, 6, 7, then T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मतलब C4 के बाद से पूरा ले लो आप thoracic का 12 तक. ये पूरे पार्ट को कौन कवर कर रहा है? JD2. और ऊपर के पार्ट में चले जाओ, then you have C1 से लेकर C4. So ये जो CV1 लिखा हुआ है ना, ये I think misprint है, इसको आप C1 कर लो. It is not CV1. So C1 से लेकर C1 that is your atlas, C2 that is your axis. Atlas and axis ये दो bones के नाम है, C1 and C2 के. So C1, C2 से लेकर C4 तक, C1, 2, 3, 4, cervical का 1, 2, 3, 4 में कुछ भी problem है, then you will choose JD का 3. Isn't it very simple? कितना simple हो गया? JD 1, 2, 3. 1 lumbar और नीचे के लिए, 2 thoracic and cervical का थोड़े से नीचे के हिस्से के लिए, और 3 cervical के topmost part के लिए, है ना? So then temporomandibular joint, it will also treat temporomandibular joint, क्योंकि ये upper का part का हो गया. So it will treat the cervical का 1, 2, 3, 4, and JD3 will also treat temporomandibular joint, that is your TMJ. TMJ का ट्रीटमेंट करेगा. Upper cervical vertebrae, joints of atlanto-occipital. Now you understand why did we study about atlanto-occipital? Because it is treated by JD3 and jaw joint. So this is about JD3. Huh? And under special note, it is written for problems of upper jaw, choose JD3 with TW23. Upper jaw की problem है and lower jaw की problem है, तो specific point बता दिए. Upper jaw के लिए you choose JD का 3 number point. That is clear to everyone. Why are we choosing JD3? Because it is the topmost part of the body. Along with that, you also choose triple warmer 23. That is which point of triple warmer? It is actually the last point of triple warmer meridian, right? So where is this triple warmer 23? This is triple warmer 23. So this is just beside the eyebrow, है ना? So ये actually अगर आप ध्यान से देखो तो this is actually the continuation of the upper jaw. इसके पास आता है, इसका बहुत important point हो गया triple warmer 23. And for lower jaw you have JD3 with stomach 2. So where is stomach 2? This is stomach 2. So for lower jaw की problem, lower jaw में कहीं भी कुछ भी problem आ रही है, then we should choose stomach 2. So this is just below the eye. Eye का center point, जहाँ आपका pupil है ना, अगर आप straight देख रहे हो, if you are looking straight, then just below the pupil you have on the bone, just below the eye is your stomach 1. अगर इसको ऐसे pressure दोगे तो you will find little pain here because this is a sensitive point. So this is your stomach 1 and just below it, it is stomach 2. Here also many people get a lot of pain, stomach 2 because this is also very close to the sinuses, paranasal sinuses के पास में. So this is stomach 2 plus JD3 is for lower jaw problem. So this is all about JD meridian. Okay, so this is all for today. Ravindra sir, over to you now. Thank you very much, madam. Chanchal ji, actually, really, you have made us rich by our knowledge of, Dr. Walls. So we have become rich. Friends, when we become rich, what we will do? Do we increase our standard of living?
I'll request you to improve your standard of giving instead of standard of living, because this is metaphysical. What we got, the knowledge, is a divine knowledge. We have become richer. Not only you can live richer, but you have to improve giving also, standard of giving. How do you give? You have to share this. You have to bring more people, induce more people to, become more rich. Until we meet, goodbye to everybody.